Now we are going to derive an expression to see gravitational self energy of the galaxy. अभी हम gravitational self energy of the galaxy देखने जा रहे हैं, ठीक है, derive करने वाले हैं. तो let the galaxy be made of capital N number of stars. अभी यहाँ पे ये हमने ये कंसिडर किया है कि गैलेक्सी में कैपिटल N नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है. ईच ऑफ मास m1 m2 mn during the formation, during its formation, let stars of mass m2, ठीक है. अभी हमने स्टार ऑफ मास m2 को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से एक डिस्टेंस r12 तक लेके आ रहे हैं. r अभी हमने फर्स्ट कंसिडर किया है स्टार, फर्स्ट स्टार का मास है m1, वो फिक्स्ड है, और m2 को हम इन्फिनिटी से एक एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r12 तक लेके आ रहे हैं. लेट द स्टार्स ऑफ मास m2 be brought from infinity to distance r12 near the star STA star m1. Then the potential energy of star of mass m1 will be, potential energy रहेगा u1, small u1 is equal to minus g mass of first star into mass of second star divided by the distance r12. When star of mass m3 इज, अभी हम क्या करेंगे, स्टार m3 मास वाले स्टार को m1 स्टार के पास लेके आ रहे हैं एट ए डिस्टेंस r13. व्हेन स्टार ऑफ मास m3 इज ब्रॉट एट डिस्टेंस r13 to m1, then corresponding potential energy is given by u2 is equal to minus g mass m1 है m3 है divided by r13 and likewise so on. Then the total potential energy of star of mass m1 विल बी, अब पोटेंशियल एनर्जी m1 के लिए रहेगा कैपिटल U1 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन US तक हम अभी फिर से कंसिडर करें दूसरा, ठीक है. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू वी गॉट माइनस जी m1 m2 अपॉन r12 माइनस जी m1 m3 अपॉन r13 माइनस जी m1 m4 अपॉन r14 and so on minus g m1 mn upon r1n is equal to minus g m1, we will take it outside and inside the bracket m2 upon r12 plus m3 upon r13 plus mn upon r1n we will get. Again we will put in another form. So this is all summation, so we can make use of summation. K is equal to, here it is starting with 2, so K is equal to 2 to n, this is capital N, make it capital N, mk upon r1k. Here this summation exclude the term k is equal to
1. Similarly, the potential energy of M2 will be U2 is equal to minus Gm2 summation K is equal to 1 to N Mk upon R2K. Here we will exclude K is equal to 2. Similarly, we continue this process up to the last star. So we will obtain Un is equal to minus Gmn summation K is equal to 1 to N Mk upon Rnk. Here we are going to exclude K is equal to N. In summing, when we will sum all this, we can see that each term will appear twice. So we are not interested in getting twice, so we will divide it by 2. In summing U1, U2, Un, it is found that each term appears twice. जब हम सम करते हैं तो हमने ये देखा कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे ट्वाइस में 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो हमें 2 टाइम्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे बाय 2. हैंस द सम शुड बी डिवाइडेड बाय 2. Therefore, the total potential energy of galaxy U is equal to 1 by 2 U1 plus U2 plus Un. We can see we will take G common, so G by 2 inside the bracket M1 summation K is equal to 2 K not equal to 1 to N Mk upon R1K plus M2 summation K is equal to 1 K not equal to 2 to N Mk upon R2K plus, we will write all the terms, we will obtain minus G by 2 summation J is equal to 1 to N Mj summation K is equal to 1 to N. We can see here is 1, here is 1, here is 2, here is 2. So we can write Mk upon Rjk provided J is not equal to K. All the conditions is now it is satisfying all the condition. In further solving, so it becomes minus G by 2 summation J is equal to 1 to N summation K is equal to 1 to N Mj Mk upon Rjk provided J is not equal to K. Now as the distance between two stars is the same, आर जे के इज इक्वल टू आर. अभी हम दूसरा एक कंडीशन लगा रहे हैं, हमने अभी ये मान के चल रहे द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स कैसा है, सेम है. अगर सेम है तो आर जे के किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर हमने कंसिडर किया. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन आवर इक्वेशन, वी विल गेट इन दिस इक्वेशन. तो यू इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ये हो गया आर के बराबर, सो ये समेशन से बाहर आ गया, तो दिस बिकम्स माइनस जी अपॉन 2 आर समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n mj summation k is equal to 1 to n mk, or where j is not equal to k. इसे और आगे सॉल्व करते हैं. वी विल सॉल्व फर्दर. माइनस जी अपॉन 2 आर. फर्स्ट के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व m1. नाउ इनसाइड द ब्रैकेट k is equal to 2, k not equal to 1. We already saw this. Just we are again rewriting mk plus m2 summation k is equal to 1, k not equal to 2, mkn
plus, and we will solve. So what we can see here, minus g upon 2r, here this is m1. Now we will open the bracket, so it is not equal to 1, so m2 plus m3 plus m4 and so on, plus m2 twice m1 not equal to 2 means plus m3 plus m4 plus m3. We will solve for m3. You will get inside the bracket m1 plus m2. You can exclude m3, then m4 and so on. So here we can see in each bracket there are total number is capital N. हमने in the beginning we consider n number, so this will continue up to mn. So यहाँ पे जो bracket, inside the bracket you will only get n minus 1 terms are there. अगर n is equal to 5 है, suppose 5 है, 5 में से 1 तो है ही नहीं, तो इसके अंदर 4 है, यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ भी 4 है, यानी ये bracket के अंदर 5 minus 1 objects are present. तो similarly हमारे पास n है, तो इसके अंदर n minus 1 terms are present. So writing, moving in the same manner, in each bracket there are n minus 1 terms and there are total n terms. Also, abhi one more boundary condition. Now we are considering m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to capital M. So substituting in the original equation, we obtain u is equal to minus g upon 2r. Here it becomes m square into n minus 1 term into n. Since n is very large, means n is of the order of 1 crore. If you minus 1, subtract 1 from 1 crore, it hardly make any difference. So just considering that thing, so we will obtain n minus 1 is taken nearly equal to n. Therefore this equation star becomes u is equal to minus g m square n square upon 2r. This is gravitational energy of the galaxy. Thank you.